how to execute a trade step by step, right? So that's what we are going to do today. So ध्यान दीजिए, कल जिसने भी नोट्स लिखे थे, वेरी गुड, आज उसी नोट्स को कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है और आप काम कैसे कर सकते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट अप, फिलोसफी ऑफ ट्रेडिंग. दोज हु मिस यस्टरडे सेशन, सबको बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी है ट्रेडिंग का, which has been designed by us, which is very very common to all of us. Okay, and what is that? It is your identification, it is your confirmation, and it is your execution. तो आइस फिलोसफी जो है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसे हमें कंफर्म करना है, और फिर हमें एग्जीक्यूट करना है. क्लियर एवरीवन? राइट. सो अभी हम आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे वहां पर चलते. ऑलराइट, सो नाउ लेट मी मूव टू NeoTrader. Okay, so I have NeoTrader here on the screen, and right now I am going to show you how you can take a look at the important elements in NeoTrader with which you can go ahead and execute the positional trade. तो अभी हम positional trading के बारे में बात कर रहे हैं, so let's stick to positional trading. All right, so now first up, where will be our confirmation? अभी ये जो लाइव मार्केट सेशन है, ये मैं आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए मैं आपको समझाऊंगा. तो आप लोग मुझे बताएंगे कि करना क्या है, और मैं देखूंगा कि आप लोग सही कह रहे हैं. आर यू टेलिंग मी द राइट अप्रोच और नॉट? सो आइडेंटिफिकेशन, वेयर विल बी डू द आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम? आइडेंटिफाई कहां से करेंगे? वेरी गुड, आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम CPR. तो CPR का पेज यहां पर है, राइट? CPR, तो यहां पर CPR क्लिक करने पे ये पेज खुलता है, and this is the CPR page. All right, all of you can see here that this is the CPR page. So now you can see that this CPR page जो है यहाँ पे, okay, so CPR page जो है यहाँ पर आपको ये समझा रहा है कि इसको कैसे आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो है, राइट, in this CPR, the first thing what we have to do is we have to change it to weekly. Okay, तो लाइव मार्केट है, तो उसकी वजह से ये ऑटो रिफ्रेश जो है वो हमेशा चेंज होता जाएगा, तो इसे आप बंद कर दीजिए. यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर पेज, ओके, फ्रॉम हियर एंड हियर. इज एवरीवन ऑन CPR पेज? कैन यू टाइप CPR ऑन द चैट गाइस? सब लोग CPR पेज पे है? Is everyone on the CPR page? Can you type CPR on the chat? तो CPR पेज में अभी फर्स्ट स्टेप है. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज change this to weekly. Second step is turn off the auto refresh because default is the daily pivot. Okay, default है daily pivot. डेली में, मंथली में, वीकली में, सब में CPR कैलकुलेट होगा. सो अभी हम इसको वीकली सेलेक्ट करेंगे पहले और इसे ऑटो रिफ्रेश में डाल देंगे. विल पुट इट इन ऑटो रिफ्रेश. नाउ विल टर्न इट ऑफ द ऑटो रिफ्रेश, देन वी विल स्क्रॉल डाउन. ओके, वी विल स्क्रॉल डाउन. सो now you can just see here that as you go down, okay, as you go down, you will come to this panel. Can you see here? You will come to this panel. और ये पैनल में आपको वाइड 7 और नैरो 7 दिखेगा. सो हमें कहां पर ट्रेड लेना है? हमें नैरो 7 पे ट्रेड लेना है. ओके, हमें नैरो 7 पे ट्रेड लेना है. सो नैरो 7 के जो कैंडिडेट्स है यहाँ पे, सो दिस आर ऑल द नैरो 7 कैंडिडेट्स. ऑलराइट, नाउ इन दी नैरो 7 कैंडिडेट्स, ओके, you are having these names here. You can see here, these are the names. यहाँ पर आपके ये सारे नाम मौजूद हैं. तो आप क्या करेंगे as part of the identification process? Okay, what are you going to do? You are going to create a watch list. Okay, you are going to create a watch list. और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पर क्रिएट अ डायनामिक वॉच लिस्ट. आई जस्ट से ऐड. तो ये सारा
नैरो 7 में ऐड हो जाएगा। सो नैरो 7 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक नाम के साथ सेव करना है तो आप यहां पर जाइए, ऐड टू वॉच लिस्ट। यहां से आई कैन जस्ट ऐड नैरो 7 फॉर द वीक। कैन यू सी हियर NR7 वीक। सो यहां पर यही यही वॉच लिस्ट में दोबारा क्रिएट करता हूं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट, so what I'll do, okay, I will just write here NR7, okay, underscore week। यहां पर लिखूंगा ऐसे, और यहां पर आई विल क्लिक द प्लस सिंबल। सो इफ आई क्लिक द प्लस सिंबल, all these stocks, first of all I click the, wait, it is just deleting it. So once I delete the watch list, okay, then I will go and add the set of stocks to the watch list. So again I'll go here, week, ओके, वीक किया, इसको बंद किया। निफ्टी FNO है। अगर ज्यादा स्टॉक्स चाहिए, आई इंक्रीज इट टू निफ्टी 500। सो मैंने मेक इट निफ्टी 500, पूरे 500 एट द क्लिक ऑफ अ बटन। दैट इज द एडवांटेज, एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू विल गेट ऑल द स्टॉक्स दैट आर नैरो। सो यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं ऑन द नैरो 7। सो दिस आर द नैरो 7 स्टॉक्स। तो ये नैरो 7 स्टॉक्स का अभी हम वॉच लिस्ट बना रहे हैं। तो NR7 week, okay, now in this NR7 week I will just add the stocks. So all the 60 stocks got added into a watch list. What is a watch list? Watch list is a bucket which you can pull up in any page of NeoTrader. So now I have created this watch list. If you want to create a new watch list, go here. All right, just go here, okay, एंड टाइप इन द नेम। जहां पर मैंने टिक मार्क डाला है वहां पर नाम टाइप कीजिए, और नाम टाइप करने के बाद, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट टाइप द नेम हियर, लाइक आई डिड NR7 अंडरस्कोर वीक, फिर यहां से पूरा आप यू कैन जस्ट क्लिक द प्लस, so that name will be there। Anytime you want to create, you can add here। Now for example, you have already created a watch list and you want to remove something from that। I am just re-explaining this point। So what you have to do, you have to go to symbol, okay, and then you have to select that watch list for example, and then just click on the name and then remove that symbol। You can just click on remove, or remove हो जाएगा। Okay, so this is how you create the watch list। Now I have created the watch list, ठीक है। Now what is the next step? साथ में let us discuss and let us go step by step। So now what I will do, I have to find out one important confirmation, which is if I want to buy a stock, okay, or sell a stock, what is one of the things which we had discussed? Stock should cross the, can someone assist me? कोई बता सकता है मुझे? स्टॉक शुड क्रॉस द प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो। तो यहां पर ये जो लेवल्स के टैब है, उसमें आपको, आपने जो बनाया था NR7 वीक, राइट, सो उसके आपको प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो मिलेंगे। यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा। बट नाउ यू कैन डू द सेम थिंग with rolling ticker। Let me show you how। NeoTrader has got everything for you, you just have to pay attention। Now here I just have to go and I have to click on prices week। so ये मैंने चेकबॉक्स किया, यहां से मैंने NR7 का सेलेक्ट किया, और जैसे मैंने NR7 का मैंने सेलेक्ट किया, तो यहां पर देखिए ये NR7 के स्टॉक्स है, ओके, and it is telling me the prices crossing the previous week high of this bucket। so this is my step number 1, okay। then I go and do step number 2। then I get the stocks that are crossing the previous week high or the previous week low। you can see here that it will come with the timestamp। you can see here कि एक टाइम स्टैम्प के साथ आएगा और आपको बताएगा कि ये कब क्रॉस हुआ। सो टुडे इज 24, यू कैन सी हियर ये सारे स्टॉक्स के प्रीवियस वीक लो टूटे और इसके प्रीवियस वीक हाई क्रॉस हुए। कैन यू सी दिस?
आपको कुछ देखना नहीं है, नियो ट्रेडर आपको बता देगा। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी विच यू गॉट टू हार्नेस। तो यहां से आप हार्नेस करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? प्लीज टाइप CLR ऑन द चैट गाइस। सो फर्स्ट स्टेप इज आई गो टू द रोलिंग टिकर। ओके, अभी हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया है, हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ है फ्रॉम द CPR पेज ऑन द हीट मैप। नाउ आई विल गो हियर एंड अगेन मैं आपको बताता हूं, रोलिंग टिकर पेज पे आपको जाना है। ऑलराइट, आपको आपका वॉच लिस्ट सेलेक्ट करना है, आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स होने चाहिए। नाउ यहां से कौन सा टेक्निकल एनालिसिस टूल आपको चलाना है वो क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक किया प्राइजेस क्रॉसिंग द प्रीवियस वीक हाई और लो। तो यहां से मुझे पता चला कि ये सारे स्टॉक्स में हो रहे हैं। टुडे इट हैज हैपेंड इन many stocks. You can see here that today's counter starts from Astral. It broke the previous week low. Then you can see that some more stocks are coming. So previous week low भी टूट गया, right? So what we are doing now is the confirmation part. Got it? What we are doing is the confirmation part. So previous week low टूट गया. Now what is the next major step for confirmation? We will go to the कैमरिया पेज। ओके, और फ्रॉम रोलिंग टिकर यहां पर आपने देख लिया, राइट? सो द सेम थिंग व्हाट इज देयर इन द कैमरिया कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम हियर, लाइक फॉर एग्जांपल प्रीवियस वीक हाई क्रॉस्ड। तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस नेम, ओके, and I will open the stock analyzer. How many of you have seen stock analyzer? Can you type SA on the chat? How many of you have seen stock analyzer? Very good. So in the stock analyzer, you have to go to the multi-day tab. And in the multi-day tab, all the Camarilla values are already there for you. Okay. This is the stock of Wellcorp. तो आप देखिए स्टॉक का नाम यहां पर आएगा राइट एट द टॉप, वेलकॉर्प, और यहां पर आपको उनके वैल्यूज मिलेंगे, राइट? सो प्रीवियस वीक हाई तो क्रॉस हो गया, बट यहां पर एडिशनल कंफर्मेशन और क्या है? हैज द प्राइस क्रॉस्ड H4? हैज द प्राइस क्रॉस्ड H4? या हैज द प्राइस क्रॉस H4? H4 कहां पर है? H4 कहां पर है? H4 यहां पर है, राइट? और H4 का वैल्यू जो है, H4 का वैल्यू जो है वो यहां पर है, H4, H5, H6। H4 के आगे आपको ट्रेड लेना है, H5, H6 तक आपको ट्रेड के लिए प्ले करना है, और आपका स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे होगा। तो यू विल wait at least for the price to hold about 30 minutes. Okay, minimum 30 minutes it has to hold above this level. So you can, if you're looking at a chart also, a 30-minute chart, देखिए चार्ट कौन सा देखेंगे आपको नियो ट्रेडर बताएगा, ताकि आपका एक्शन फास्ट रहे। सो यहाँ पर क्रॉस हुआ है, नहीं हुआ है, तो H4 क्रॉस नहीं हुआ है, सो आई विल वेट। क्लियर? आई विल वेट नाउ। And what is the other element which I discussed yesterday? What is the other element which I discussed yesterday? Can someone tell me? और क्या डिस्कस किया था मैंने? वेरी गुड पंकज, वेरी गुड मनीष, पंकज, यस, पीडीआई एमडीआई डिस्कस किया था। तो पीडीआई का वैल्यू कहां पर है? पीडीआई का वैल्यू कहां पर है? पीडीआई आपको आपको सब कुछ मिलेगा स्टॉक एनालाइजर में, आपको सब कुछ मिलेगा स्टॉक एनालाइजर में। पीडीआई का वैल्यू यहां पर है। हमको लॉन्ग करना है तो पीडीआई देखना है, हमको शॉर्ट करना है तो एमडीआई देखना है। तो फिलहाल पीडीआई का वैल्यू 79.99 है, विच इज नॉट मीटिंग आवर क्राइटेरिया। तो फिलहाल हम इस
कोई भी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? वी डोंट नो विच ट्रेड नॉट टू टेक। प्रीवियस वीक हाई तो क्रॉस हो गया, बट ये सारे चीज कंफर्म नहीं हो रहे, तो इसके लिए ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा। सो इन अ सिमिलर वे, आई वॉन्ट यू टू टेक 5 minutes एंड आई वॉन्ट यू टू गो एंड फाइंड आउट लॉन्ग और शॉर्ट क्या ट्रेड बन सकता है। अब ये ऑन द स्पॉट होमवर्क है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाइए और आप लोग देखिए। एक 5 minutes का वेटिंग पीरियड है, बट आई वॉन्ट यू टू गो एंड टेल मी कि कौन सा ट्रेड बन रहा है। सो स्टेप नंबर 1, ओके, स्टेप नंबर 1, go into CPR, do your identification on the weekly, okay, do it on the weekly identification, create the watch list and then get the watch list into rolling ticker। रोलिंग टिकर में आ गया तो आपका कंफर्मेशन चालू हो जाएगा। कैसे? प्राइसेस क्रॉसिंग द प्रीवियस वीक हाई और द प्रीवियस वीक लो। लाइक फॉर एग्जांपल, यहां पर आया, जैसे नाम आया, क्लिक ऑन द नेम। once you click on the name, then you go to the stock analyzer will open। you have to see if it is a multi-day tab, multi-day tab ही खुलेगा। ऑल राइट, मल्टी-डे टैब में जाने के बाद आपको देखना है कि मल्टी डे में अगर मुझे शॉर्ट करना है तो कहां पर है। इज इट बिलो 25? बिलो 25 इज द बेस्ट। 20 के आगे मोमेंटम शुरू होता है, 25 के आगे इट पिक्स अप स्पीड। नाउ इफ आई हैव टू सेल, देन आई हैव टू लुक बिलो L4, okay, below L4। so currently the particular stock is trading below L4, 181.8 is below L4। तो यहां पर शॉर्ट बन गया है। यहां पर MDI इज 22.5 विच इज ऑल्सो ओके। सो यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड बन रहा है। क्लियर? चलिए, 5 minutes ऑन द क्लॉक। सो इन अनदर 5 minutes फ्रॉम नाउ, लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू आर गेटिंग, देन फिर हम उसको इवेलुएट करेंगे। चलिए, लेट्स गेट फास्ट एंड लेट्स स्टार्ट क्विकली।
Okay, so some of you have given some trade ideas, so let's get started. Good. So the first one by Manish, Aster DM. All right. So let's check out Aster DM, and again we can check out Aster DM directly from the rolling ticker page and see what has happened. Whether it is there. Yes, previous week high cross. Today Aster DM. So now it had broken the low. Now it has crossed the high as well. So now let's see what is Aster DM telling us. All right. So is everyone clear? NR7 वीकली में आ गया था, हमारे वॉच लिस्ट में था, तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया. अभी आइडेंटिफिकेशन के बाद अभी हम चल रहे हैं कंफर्मेशन पे. सो कंफर्मेशन कहां से करेंगे? रोलिंग टिकर से. सो रोलिंग टिकर में जाकर हम देखेंगे कि एस्टर डीएम का ओवरऑल सिचुएशन क्या है. सो आई विल गो इन एस्टर डीएम एंड आई विल क्लिक ऑन द नेम. सो स्टॉक एनालाइजर ओपन्स. All right, stock analyzer opens and now on multi-day I want to check out what is Aster DM. तो उसमें थोड़ा bearish pressure था, तो उसकी वजह से उसका PDI जो है it has not come up. All right, उसका PDI जो है it has not come up. So वहां से PDI is the most sensitive, उसमें sensitivity ज्यादा है, वो immediately आपको डिटेक्ट करके आपको बताएगा. ओके, इमीडिएटली आपको डिटेक्ट करके बताएगा, तो यहां से आपको पता चल जाएगा. सो नाउ फॉर एग्जांपल करेंटली इट इज एट 432. तो नाउ इज इट वर्थ अ बाय? या enough of stocks guys, enough of stocks. Let's first discuss, let's first try and understand, is it worth a buy? पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स एंड नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स या माइनस डायरेक्शनल इंडेक्स. सो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. हमारा दूसरा कंफर्मेशन है हाई क्रॉस हो गया, बट कंफर्मेशन में इतना आप करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ क्वालिफाइड ट्रेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल ट्रेडिंग इज क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि या क्या ये आपके क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं या नहीं. जब तक आप ऐसा ट्रेडिंग नहीं करेंगे, राइट, you will never be able to generate consistent return. Got it? So right now this trade is not worth taking. आई होप मनीष आपको समझ में आया. आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम मनीष बिकॉज आपका मैंने पहला स्टॉक लिया है. आई होप आपको समझ में आया कि यहां पर हुआ क्या है, आपको क्या क्या देखना है. जस्ट बिकॉज वीकली हाई क्रॉस हुआ इट्स नॉट इनफ. यस, इट वाज इन द NR7. वो वाला बकेट इज योर आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन से डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में नहीं जंप करना है. आइडेंटिफिकेशन से पहले कंफर्मेशन से क्वालिफाई करना है. जैसे आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे एक इंटरव्यू के लिए या एक एडमिशन के लिए, वो सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं ना. लाइक अगर इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ वीजा, दे चेक सो मेनी पैरामीटर्स एंड देन यू आर गिवन द permission to fly. You are given the permission to get yourself admitted. So those are the things which every trader misses, and that is why I cover it in so much detail in my workshop. So मनीष को समझ में आ गया. तो अभी मैं एक एक करके सबका स्टॉक लूंगा. ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज बाय राजवेल ऑन HDFC बैंक. ओके, HDFC बैंक ने काफी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में शुरुआत से इट गिवन. यू कैन सी हियर
अगेन इट हैज क्रॉस्ड प्रीवियस वीक हाई क्रॉस अभी हुआ, लेकिन ओके इट वाज शोइंग सम मूवमेंट बट प्रीवियस वीक हाई क्रॉस अभी हुआ। और ये इसको क्लिक करेंगे, okay, there are HDFC Bank which are appearing from many others as well. So let's go step by step. Okay, और स्टॉक्स मत ढूंढिए, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। मैंने आपको क्या कहा था, प्रोसेस की गारंटी वो नियो ट्रेडर देगा आपको, प्रोसेस की गारंटी। तो प्रोसेस आप जब तक इंटरनलाइज नहीं करेंगे आपको तकलीफ होगा। सो नाउ एचडीएफसी बैंक, वेयर इज द पीडीआई? पीडीआई कहां पर है? पीडीआई इज अबाउ 25, ओके। एंड वेयर इज द प्राइस राइट नाउ? प्राइस हैज क्रॉस द प्रीवियस वीक हाई, ओके। सो कंफर्मेशन में एटलीस्ट 2 out of 3 शुड क्वालिफाई, ओके। व्हाट आर द 3 कंडीशंस? वीकली हाई, प्राइस क्रॉसिंग H4 एंड द पीडीआई। अगर 3 में से 2 भी आ जाए, still you can go ahead and take the trade. Now what has happened? The current value of HDFC Bank, where is it? Current value of HDFC Bank, where is it? The more things you will see, the more delayed your entry will be, okay. The more things you will see, the more delayed will be your entry, right? So where is H6? H6 is here, so it is almost close to the target. How many of you understood this? It is close to the H6. H6 के आगे जा सकता है? Answer is yes. But for the moment, just continue to maintain H6 as your target. तो अभी H6 के नजदीक आ गया है, अब जाकर HDFC बैंक लेना उचित नहीं है। क्यों? Where is the stop loss? हमारा एंट्री कहां पर है? एंट्री H4 के ऊपर होना चाहिए, और हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए H3। सो H3 में स्टॉप लॉस रखेंगे 1697, एंट्री करेंगे यहां पे। सो कैन वी टेक दिस ट्रेड राजवेल? या राजवेल, यू थिंक वी कैन एंटर नाउ? राइट? सो दो इट इज अ करेक्ट ट्रेड, द अदर ट्रेड वाज नॉट करेक्ट, this trade is correct, but it has reached a limit right now. So now if you want to take the trade, so now your next question can be, if I want to buy HDFC Bank, when and where should I buy? Now if you are looking at HDFC Bank, okay, so for example, all right, so for example, let's put up HDFC Bank, right? It's one of the stock that has been moving quite well and it has been driving bank nifty, okay. So HDFC Bank, okay, this is the, let me put the weekly pivot. ये I'll make it to 30-minute charts, okay. So let me come out this. This is the, so this has got maximum R4. So R6 level is here, okay. So it is not visible in this chart, but R6 level is here and it is close to R6. So now if you want to take HDFC Bank, now if you want to take HDFC Bank, wait for a 30-minute candle close above H6, and then that will be of course a riskier trade, क्योंकि आप एक स्ट्रेच के बाद ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस होगा H5. But I would advise that go for another trade, okay. I would advise go for another trade. Let's see what are the other stocks that has come. Atish is saying Piramal Pharma, okay. So again I'll go to rolling ticker.
It's not here in this. I think it is not part of the NR7. Ashutosh is saying Godrej property. Okay. This happened on the 22nd of October. Okay. So let's see what has happened here. Godrej property. Now, of course, maybe if it's still persisting, current value is 2933. So which is below L4. Very good. So Godrej property is a good trade. Can anyone tell me why? It is below L4. MDI is about 25 and there is still some room on the downside. His weekly low is also broken. Yes, all three are met. So I hope Ashutosh, you got an idea. Your selection is correct. Can you see how if you do step-by-step selection, you will be able to get the idea. So HDFC Bank was the right trade. पहले ट्रिगर हो गया था, अब वो टारगेट की तरफ आ गया. So NR7 में से अगर आप starting of the week करते, so you can do the same activity. So I am going to be conducting a session on Saturday, where again we will do a revision. Okay, where again we'll do a revision of whatever we have done so far, and we will see how to plan for the next week. Okay, we'll see how to plan for the next week. So this will be a session which we'll be doing on Saturday. But now try and understand how you have to follow the identification, confirmation, execution. Okay, Subhash says Reliance. So every time if you notice, I am going and checking the rolling ticker. और यहां पर जा रहा हूं और यहां पर मैं रिलायंस लिख रहा हूं. तो यहां पर रिलायंस मुझे आ रहा है प्रीवियस वीक लो ब्रोकन. सो प्रीवियस वीक का लो टूट गया है, राइट. सो प्रीवियस वीक का लो टूट गया है येस्टरडे. सो अगेन आई गो टू रिलायंस. और अभी आप लोग बताओ कि रिलायंस का ट्रेड सही है या नहीं. ये ट्रेड सुभाष जी का है रिलायंस का. मल्टी डे पे जाऊंगा, चेक करूंगा और देखूंगा कि मुझे शॉर्ट करना है या नहीं. Is Reliance worth a short or no? I want you all to tell me. Yeah, I want you all to tell me. Okay, I already have the answer, but I want you all to think and tell me. Okay, yes, 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 yes. Very good. Why? Okay, for those who have not got it, this is the current value. Currently, it is trading below L4. It is weekly low टूट गया है कल. L4 के नीचे ट्रेड हो रहा है और उसका एमडीआई भी 25 के ऊपर है. कितने लोगों को समझ में आया है? प्लीज टाइप CLR ऑन द चैट गाइस. कितने लोगों को समझ में आया कि ऐसे आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं. नाउ इफ यू वांटेड टू सी a snapshot, okay, if you wanted to see a snapshot of how, so first of all you can go here. I can go to the levels page और यहां से levels पेज में से अभी हम चलेंगे और NR7 के जो भी स्टॉक्स हैं उसके क्या सिचुएशन है वो हम देखेंगे. तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये सारे स्टॉक्स जो है यहाँ पे, ओके, 60 रिकॉर्ड्स है. सो आई एम गोइंग टू सी नाउ what has happened to them. So you can see that in some stocks it has gone to L5. You can see L5, L5, L5 तक पहुंच गया है. ये स्टॉक में L6 तक पहुंच गया है. कौन सा है ये?
PNC Infra has reached L6, तो पहले पहुंच गया था. You can see here the underline which comes. Suppose you want to quickly find out from your watch list which are the stocks that are hitting. So you can just type a name here, like for example, so suppose you type here, you will get the name of the stock which is there in your watch list. So what is your watch list? Your identification watch list. Your identification watch list is this NR7 weekly bucket. उसमें what levels have crossed? What levels have crossed? You can know from here. How much time did it take to find out? Can someone tell me how much time did it take to find out? कोई भी stock, PNC Infra रहने दो, या अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस क्या चल रहा है, रिलायंस नीचे चल रहा है, अभी देखिए अभी L4 के नीचे है. जब भी जब भी कोई पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाएगा तो यहां से क्रॉस हो जाएगा. क्लियर है? कैमरिया के साथ आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब मिल जाएंगे. आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब मिल जाएंगे. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है. और हम आपको हर एक वर्कशॉप में अलग अलग स्टाइल में कैमरिया के साथ कैसे काम करना है बता रहे हैं. गेटिंग इट एवरीवन? So you can see here, this was of Reliance. चलिए, let's take another 2 minutes and let's find out which other trade is coming up. या आप लोग बताइए मुझे क्या ट्रेड आ रहा है, अभी क्या ट्रेड ले सकते हैं. Let's go to the rolling ticker, okay, and let's find out what name is coming up. As of now, you can see, okay, Adani Ports. Pankaj says Adani Ports. Okay, now again स्टॉक एनालिसिस में चले जाते हैं. यहां से ही हम अदानी पोर्ट देख लेंगे. राइट, सो नाउ अदानी पोर्ट्स. ओके, नाउ इन अदानी पोर्ट्स, yes, so we saw that Adani Ports had broken the weekly low today, sorry. Now in the stock analyzer you can see that currently it is trading below L4. अभी L5 तक पहुंच गया है ऑलमोस्ट. यू कैन सी हियर L5 तक पहुंच गया है. नाउ इसका MDI, इसका L4 ये नीचे है. सो इज इट अ ट्रेड, इज इट अ ट्रेड वर्थ टेकिंग? Is it a trade worth taking? My answer is yes. It is a trade worth taking. But yes, very good point by Asgar. यहाँ पर थोड़ा रिस्की है. क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इज एट L3. ओके, कभी ऐसे हो सकता है कि प्राइस विल गो अप टिल L4 and reverse. But then you got to understand that if you are going to take a trade now, you are at a risky point. I'll again repeat. Okay, I'll again repeat that when it moves below this particular level, this is your entry. Okay, and this is your target. अगर आपको कंफर्मेशन करना हो, अगर आपको कंफर्मेशन करना हो तो आप 30 मिनट्स के चार्ट पे आप देख सकते हैं. आप 30 मिनट्स के चार्ट पर आप देख सकते हैं. तो ये 30 मिनट का चार्ट है. ओके, ये अब 30 मिनट के चार्ट में आप जाकर देख सकते हैं. सो नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑल ऑफ अस हैव? ऑल ऑफ अस डोंट नो
what name to select. How many of you agree? Please type CHA on the chat. कि चार्ट में कौन सा स्टॉक डालें. स्टॉक डालना है चार्ट पे तो ही जाकर आप ट्रेड कर पाओगे. दैट वाज बीन द थिंकिंग. बट देन विच चार्ट विल यू सेलेक्ट? Which chart will you find out? Where you will go? What you will see? That is the problem which NeoTrader is solving for you. आपका एंट्री सॉल्व कर रहा है और आपको बता रहा है कि क्या आप अभी आपको करना है या नहीं. Getting it? Now let's see another example. Okay, I'm getting an example of Hindalco from Praveen. So Hindalco नहीं है in the NR7 list. I am going only by one list. I am going only by one list. So as you can see here in Camarilla, I had multiple opportunities in them. चलिए आप लोग बताएं मेरे को, आपको हफ्ते में कितना ट्रेड चाहिए? अगर आपको हफ्ते में कितना ट्रेड चाहिए? Can you tell me? Suppose in a week, how many trades you want? Per day one. मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं. Very good. 2 to 3 is a fair estimate. Correct? So if you see here, if you have just followed this system this week, okay, now you would have got, since the week was on the short side, you got one trade, you got 2 trade, 3, 4, 5. इसमें थोड़े टारगेट्स भी आ गए. कितने में टारगेट आया? 1 में टारगेट आया, 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया, 5, 6, 7, 8, 9. थोड़े में तो 2 टारगेट आ गए. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 स्टॉक्स में टारगेट आए. उसमें से कैश वाले भी है, फ्यूचर्स वाले भी है. फ्यूचर्स वाले ज्यादा है. You see here 14 trades. All of you wanted 2 to 3 trades. You got 14 trades on the short side. Now on the long side, let's see. You got one trade, 15. You got one more trade, 16. Okay. So totally 16 trades. Don't you think technology can make your job easier? And that is what we are doing. We are giving you a process. We are giving you technology. और जब भी आप इसे सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट करेंगे, आप कंसिस्टेंटली आप रिटर्न बना पाएंगे. तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी द स्टेप्स वंस अगेन. हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आइडेंटिफाई कहां से होगा? आई वांट एवरीवन, ये सारे ट्रेड 5 to 6 डेज होल्डिंग पीरियड का है और ये पेज जो है एवरी 5 days रिफ्रेश होगा. सो द ट्रेड शुड बी टेकन during the week and the levels what is visible will get refreshed for the next week. Okay, whatever levels you see here on Friday, the levels will change because they will be recalculated by NeoTrader. Step number 1, what our team wrote is, first go and identify from CPR the narrow 7 and the wide 7. करेक्ट? वहां से हम वॉच लिस्ट बनाएंगे. ओके, विल गो हियर एंड विल क्रिएट अ वॉच लिस्ट. वंस वी क्रिएट द वॉच लिस्ट, then we want to find out whether the stock is breaking the weekly high or the weekly low. That is part of our which philosophy? अपने फिलोसफी में 3 अक्षर है ICE. ये हमारा फिलॉसफी का कंफर्मेशन पार्ट है. हम उसको कंफर्म करेंगे. वी विल कंफर्म वेदर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ब्रेकिंग द वीकली लो और ब्रेकिंग द वीकली हाई. चलो वो हो गया. फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा कंफर्मेशन के लिए स्टॉक एनालाइजर में जाएंगे.
और स्टॉक एनालाइजर में हम चेक करेंगे कि ये क्या करेगा। तो पहला क्या करना चाहिए? पहला क्या करना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड ओंका। You have to first see whether it is crossing H4 if you want to buy, L4 if you want to sell. Okay, so हमारे पास तीन वेरिएंट्स है कंफर्मेशन के. We have got three variants for confirmation. So suppose you are buying, weekly high should be crossed, then H4 should be crossed with H3 as the stop loss and your PDI. Okay, your PDI should be more than 25. Or if you want to sell, your MDI should be more than 25. तो उसके बाद आपको ट्रेड लेना है with H5 H6 as the stop loss. Can you all type POS on the chat guys अगर आपको ये स्टेप समझ में आया है तो, वरना आप आपके क्वेश्चंस टाइप कीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं. आई वॉन्ट एवरी वन टू टाइप POS. पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में हर एक टाइप का ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से मूवमेंट दे रहा है उसमें एक तरीके का ट्रेडिंग आप करने जाएंगे चैलेंजिंग होगा. सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग वन टूल विच इज कैमेरिया, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर टीचिंग मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग. अगर आपको करना नहीं है नो प्रॉब्लम, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप करेंगे तो यू विल एड अ वेरिएशन इन योर ट्रेडिंग स्टाइल, एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू to sustain in the market, right? All of us want to sustain in the market. I don't have to ask anyone if you want or no, but then if you want to sustain in the market, you also have to have different styles, correct? Diversification बाहर अलग अलग एसेट क्लासेस में करते हैं, यहां पर आप डाइवर्सिफिकेशन ट्रेडिंग स्टाइल में भी आप कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि काम कैसे करना है. गॉट इट? फॉर पोजिशनल ट्रेड हाउ टू फाइंड आउट वीकली हाई क्रॉस. So you can find out the weekly high or low cross from the rolling ticker. You can find out from the rolling ticker how to do a positional, how it is crossing on the week, because you already taken on the weekly time frame. So and then you click on the prices crossing the week. So from the rolling ticker you will get to know that. Clear? Let me go to the next question. If you are a new trader, at least you should buy 1 lakh worth of shares if you're doing it in cash. And if you are beginning your trading journey, so you should also limit your lot size. Or if you're going to take a big lot, 5,000 6,000 वाला लॉट साइज का अगर आप फ्यूचर्स का ट्रेडिंग करेंगे, दो द एक्चुअल वैल्यू इज almost the same, it begins to play on your mind. So go for a smaller lot size, trade with one lot, first understand the process and then go for increasing the lots. So मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले जो आपको बताया गया है वो आप कैश मार्केट में कीजिए, इक्विटी मार्केट में कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए. इफ यू आर नॉट क्लियर, go and reach out to our help team, our support team, and they will be happy to assist you because they know exactly what kind of activity you want to do and how you want to take it forward. So आपको जैसे करना है, काम करना है, आपको सब टाइप के अप्रोचेस आपको बताया जाएगा. All you got to do is ensure that you are reaching out to our support team and they are able to guide you in a step-by-step manner. All right? Is everyone clear?